Hello dear students. Today we are going to start our next topic, pressure exerted by gases. Dear students, as we all know, all gases exert pressure. And air is a mixture of gases, so air also exerts pressure on everything on the earth. And the pressure exerted by the air at any point on the earth is called atmospheric pressure at that point. तो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, गैसेस का इन्वेलप है, वो अर्थ के हर एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करता है। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर रही है गैस, उसको उस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एयर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज। फॉर दैट वी नीड अ फनल and a rubber sheet, thin rubber sheet, and a straw and a sellotape. Firstly, dear students, cover the upper part of funnel with the help of an rubber sheet. You can use sellotape to cover it, and then connect the stem of the funnel to a straw. Then after adjusting, you can see the apparatus will look like this. When the open end of the straw is open to the atmosphere, the rubber sheet is flat. जब स्ट्रॉ को हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, ओपन है, वो स्ट्रॉ वाली साइड भी ओपन है, तो जो शीट है, रबर शीट है, वो फ्लैट दिखेगी, एज यू कैन सी इन वीडियो। नाउ सक द एयर आउट फ्रॉम द फनल। अभी स्ट्रॉ की हेल्प से हमने जो एयर है वो सक करनी है बाहर की तरफ। Then after sucking the air, what do you see? The rubber sheet, blue colored part, you can see the rubber sheet over the funnel gets depressed. देखो ये नीचे चली गई. This is because when air from the funnel is sucked out, there is a very little air inside the funnel. The atmospheric air exerts pressure on the rubber sheet and it gets depressed. डियर स्टूडेंट्स, जब हम एयर को सक करते हैं तो एयर फनल के अंदर से बाहर आ जाती है सक करने से, और बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, जिसकी वजह से वो जब हम एयर सक करते हैं तो बाहर का प्रेशर, एयर प्रेशर शीट को, रबर शीट को इनवर्ड प्रेस कर देता है। इन नेक्स्ट एक्टिविटी डियर स्टूडेंट्स, वी नीड एन एम्प्टी कैन, ice cold water and burner. First of all, dear students, pour little water in the juice can. Then after pouring the water, keep the can on the burner and heat the water. Now air inside the can will comes out along with the water vapors. Now with the help of pair of tongs, allow the hot can to cool inside the ice cold water. What you will observe, the can gets deformed, it gets crushed. Now what is the reason behind it, dear students? For an empty can, the air pressure inside and outside is the same. When the water in the can is boiled, steam pushes the air out and the space inside the can is filled with steam. On cooling, the steam gets condensed to water and the pressure inside the can gets lowered. The can gets deformed under the action of higher air pressure outside. This is the reason why the can gets deformed. Now in next activity, dear students, the drinking of a liquid with the help of a hollow straw is also based on the pressure exerted by the atmosphere on the surface of the liquid. Now when the person sucks the juice with the hollow straw, the liquid rises into the straw due to the difference in the pressure of the air inside and outside the straw. In next video, dear student, you can see when lady sucks the juice with the help of straw, the pressure inside the straw get decreased and the pressure on the surface of the juice is more, that is due to atmospheric pressure. The juice get rises into the straw. Now dear students, we will discuss about the mercury barometer. It is also known as simple barometer.
Now dear students, as we all know that atmosphere of the earth exert pressure on each of the point of the earth. अर्थ के हर एक पॉइंट पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है. Now to simplify the concept of atmospheric pressure, an Italian physicist Evangelista Torricelli conducted an experiment, and he made a device to measure the atmospheric pressure. This simple device is called simple barometer or mercury barometer. We can also make the same device, dear students. For that we need one beaker and long glass tube. Now fill the beaker and glass tube with mercury. After filling the glass tube and beaker, keep your thumb on the glass tube. उसके ऊपर जो ओपन एंड है उस पर आपने थंब रख देना है अपना. Now keeping your thumb on the glass tube, invert the glass tube inside the beaker containing mercury. Then after, dear students, you will see the mercury level inside the tube drops gradually and then stay at a certain fixed level. The space above the mercury is empty. There is no air in that space. Dear students, you will observe that the height of the mercury column from the level of the mercury in the beaker will be 760 mm, and this is the atmospheric pressure. Now what is the reason behind it? Why it is 760 mm? It is because when the mercury level falls gradually inside the tube, and it falls gradually till the pressure of the mercury inside the tube and the pressure outside, that is atmospheric pressure on the surface of the mercury of the beaker, becomes equal. Means dear students, जो बीकर में मरकरी है उसकी सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और जो मरकरी फॉल कर रहा है टेस्ट ट्यूब में उसका प्रेशर, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक जो ट्यूब है उसमें मरकरी फॉल करता रहेगा. और जिस पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है मरकरी, वो जो हाइट बनती है लेवल से, जो बीकर में मरकरी है उसके लेवल से जो हाइट बनती है वो 760 mm बनती है, और उसी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. Dear students, there is one more mercury barometer, that is a 14 barometer, and one aneroid barometer, but it does not employ mercury. It is a direct reading barometer. Now dear students, two results we have to remember. First one, atmospheric pressure decreases with altitude, that is it decreases as we go up in the atmosphere. And second one is, on the other hand, the pressure exerted by liquids increases with depth. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिक्विड्स में, जैसे समंदर है उसके नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो है लिक्विड का, सी के वाटर का, वो हमारी बॉडी पे बढ़ता जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर लिसन्ड अबाउट दैट माउंटेनियर्स एट हाई एल्टीट्यूड समटाइम एक्सपीरियंस ब्लीडिंग थ्रू देयर नोज? दिस इज़ बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली ड्रॉप्स. क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, हमने अभी पढ़ा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. दिस लेड्स टू द रैप्चर ऑफ द ब्लड वेसल इन द बॉडी कॉजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़. क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, उतने का उतना बना हुआ है, और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो नोज़ के अंदर की जो नाड़ियाँ हैं वो फट जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वन लास्ट टॉपिक, हाउ लार्ज इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. If dear students, if we talk about the student of 8th class, if any student draw a 1 square centimeter square on his palm with the help of pen, then the atmospheric pressure will be equal to 1 kg. And if we talk about the full palm, the area will be nearly about 100 centimeter square, and the force of the atmospheric air will be 100 kg. This force is nearly equal to the weight of 2-3 boys of your age. तो इतना ज़्यादा एयर का प्रेशर होता है, एक हाथ पे 2-3 बच्चों के वेट के बराबर आपके हाथ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. So dear student, this one was the last topic of this chapter.
Now there are a few questions related to today's learning, so try to attempt these questions. Thank you.